Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. We start. Okay. So thank you all once again for coming joining this today's session. और जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग प्रेयर से शुरू करेंगे और हम लोग एक रिकैप करेंगे हमने लास्ट वीक क्या किया था, एंड देन विल गो अहेड विद श्लोका नंबर. टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोका नंबर 52. विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नाना शास्त्र विचारणे निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणः त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदार वृंदा भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन गुरुगुरु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वे विद्ये वेदान्त. हरे कृष्णा. ओके, तो हम लोग लेते हैं रिकैप. डस एनीबॉडी रिमेम्बर व्हाट वी हैव डन लास्ट सेशन? क्या लिया था हम लोगों ने? Okay, quickly I will do. We have seen few shlokas, couple of shlokas. We have seen 49 जिसमें कहा गया था दूरे नहीं अवरम. जो बुरे कर्म हैं उनसे दूर रहो. अवरम विच आर नॉट बेनिफिशियल, उनसे दूर रहो और अपना पूरा फोकस पूरा जो है वो भगवान पे रखो. और कृपणा और ब्राह्मणा क्या होता है वो हमने देखा था. ओनली अ माइजर पर्सन इज आफ्टर द रिजल्ट्स, तो वो हमेशा उसके बारे में पीछे पड़ा रहता है. फिर हमने देखा था कि एक जो भगवान का जो मतलब भगवान में लीन है भक्त, वो हमेशा वो वे सुकृत दुष्कृत है, मतलब चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हो, दुष्कृत हो, उसमें हमेशा वो इज फोकस्ड, इज नॉट. और दैट इज योग कर्म से कौशलम, दैट इज अ परफेक्ट ये आर्ट ऑफ ऑल वर्क. तो कर्म सु कौशलम, so that is perfect thing it is said. And then last was कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम मनुष्य फलम त्यक्त्वा मनीषिणः. मनीषिणः यानी जो बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं या मनीषी हैं, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, दे व्हाट दे डू इज कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, कि जो भी इस कर्मजम कर्म से जो उत्पन्न हुआ है उसको, उसके जो फल को वो त्याग देते हैं, वो उसको नहीं लेते. और इस प्रकार वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं. और पदम गच्छन्ति अनामयम, दे रीच द टॉप मोस्ट गोल, टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ लाइफ. तो आज हम लोग देख रहे हैं श्लोका नंबर 52. मैं इसको शेयर करता हूँ. सॉरी 53 है, हम लोगों ने 53 देखा था, 52 देखा था, 53 से स्टार्ट करना है. तो स्टार्ट 53.
If somebody wants to repeat, can repeat after me. Shruti vi pratipanna te श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् समाधाव अचला बुद्धिस् तदा योगम् अवाप्स्यसि. तदा योगमवाप्स्यसि. Translation: when your mind is no longer disturbed by the flowery language of Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. तो यहाँ पे भगवान जो हैं वो बात कर रहे हैं एक चीज कि you should not get attracted, you should not get disturbed by the flowery language. Disturbed means our goal of life is to achieve Lord. भगवान का भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है हम लोगों को. बट सडनली हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, अरे ये यज्ञ करो तो ये बड़ा महल प्राप्त होगा, ये यज्ञ करे तो पुत्र प्राप्त होगा, ये यज्ञ करो तो सडनली हमारा जो गोल है उससे हम भटक जाते हैं. देयर इज सो मच ऑफ ग्लिटर इन मटेरियल वर्ल्ड, कभी-कभी हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग सडनली वी स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट. तो दैट शुड नॉट हैपन एंड वेदास इज डूइंग दैट. एंड जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वेदास इज फॉर ऑल क्लास ऑफ पीपल, जहाँ पे राइट फ्रॉम एक जो जूनियर केजी वाले बच्चे से लेके राइट फ्रॉम मास्टर्स किया हुआ व्यक्ति, सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो सेक्शन है ये मेरे लिए है और ये सेक्शन मेरे लिए नहीं है. तो भगवान इज क्लियरली गिविंग इंस्ट्रक्शन, वो कह रहे हैं कि यू शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इज सेइंग एंड व्हेन इट रिमेन्स फिक्स्ड इन trance, our mind remains fixed in trance of self-realization. Our mind should always be fixed, and when you do that, then you have will have attained divine consciousness, and then you will have divine consciousness. We see earlier in earlier yugas, people were having so much divine consciousness. They could foresee what is going to happen. They could see what had happened in past, and they were so much like they could by sitting in their place, they could go to Lord, they could talk, they could do. So this was really a very nice divine consciousness. So that we are missing, and Lord is pointing out, हम लोग भगवान बता रहे हैं कि ये ऐसा है हमारे साथ क्यों होता है. तो यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं टू से वन इज इन, मतलब हम लोग अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य से अगर देखते हैं तो प्रभुपाद स्टार्ट्स विद समाधि, बिकॉज यहाँ पे भगवान समाधि की बात कर रहे हैं. समाधव अचला बुद्धि, समाधि एंड अचल बुद्धि. चल बुद्धि है वो इमीडिएटली गेट्स फ्लिकर्ड, एंड अचल बुद्धि मींस व्हाटएवर हैपेंस इज फोकस्ड. सो इफ यू सी मतलब samadhi means remaining focused. If you see हम लोग विश्वामित्र मुनि, he was in samadhi but he was diverted, he was disturbed by Menaka. So samadhi means somebody, मतलब in today's world, आज के ज़माने में अगर किसी से बोलते हैं समाधि मतलब क्या, वो तुरंत आंख बंद करके बैठ जाते हैं, अपना पद्मासन लगा के हाथ ऐसा करके मुद्रा कुछ ऐसा बना लेते हैं ऐसा, और ऐसा बैठ जाते हैं. बट ये कलयुग का समाधि. एक्चुअल समाधि मीन्स यहाँ पे प्रभुपाद उसका रियल मीनिंग दे रहे हैं. तो समाधि मीन्स टू बी ऑलवेज फोकस्ड ऑन द लॉर्ड, दैट इज समाधि. एंड दैट समाधि पोजिशन शुड बी 24 आवर्स ऑलवेज. ऐसा नहीं है 2 मिनट समाधि किया फिर वो इज डूइंग ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस, सब गलत काम कर रहा है.
Samadhi means to remain focused on the Lord, and that is to be done 24 hours a day. Even while he is sleeping, he is thinking of Lord. That is Samadhi. और हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे, मतलब देयर वर सो मेनी सेंट्स, बहुत सारे संत थे। हम लोग देखते हैं गुजरात में नरसिंह मेहता थे, महाराष्ट्र में इतने सारे संत थे। देयर सो मच, मतलब देवर बाहर का दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं, दे वर अननोन टू इट, एंड कुछ हो भी रहा है दे वर नॉट डिस्टर्ब। दैट इज समाधि। जैसे मैं हमेशा कोट करता हूँ दैट गोरा कुम्हार, दैट पॉटर, he was so much in samadhi. ऐसा नहीं है समाधि में आंख बंद करके बैठते थे, he is always thinking of Lord while walking, while talking, while doing his work, he is always doing that. So his work was to smash the mud, जो पॉटरी के लिए जो लगने वाला है वो मट्टी को वो लोग पाँव से अच्छा गूंदते थे। तो उनका बच्चा स्मॉल बेबी हिज फ्यू मंथ्स वो भी आ गया उसमें, एंड ही वाज सो मच इन समाधि, उसको पता ही नहीं चला। So remaining in that position is called samadhi. ऐसा नहीं समाधि में आंख बंद करके बैठ गए, thinking constantly of Lord is samadhi. So this is what Prabhupada is highlighting यहाँ पे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि to say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness, that is one is in full samadhi, has realized Brahman, Paramatma and Bhagwan. So that is real samadhi. Yes, Mataji, you want to say something? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Oh, Shamika Rishi Kavi, can he be an example? When Parikshit Maharaj comes and, goes to his house and asks for that water, Yeah. he's so much in devotion that he doesn't even see that the king is actually there. So just wanted to find out, can he also be an example of somebody who's being in Samadhi? Yeah, we can say that. Vaji Mataji ने शमिक ऋषि का भी ये दिया है, एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे परीक्षित महाराज ही केम, उनके घर पे आए थे। हम लोग को सबको पता है वो स्टोरी कि महाराज परीक्षित उनके घर पे आए थे, एंड ही वाज सो मच थर्स्टी, उन्होंने पानी मांगा, बट ही वाज इन सो मच इन ट्रांस। Actually, if you see, samadhi means they don't fully close their eyes. It is half closed. When we go to 6th chapter, we will see that also. भगवान बोलते हैं कि पूरा बंद नहीं करना. It should be half closed, and your mind should always be in the Lord. So Shamik Rishi was also in that position, and he was thinking of Lord. But when he asked water, he he didn't realize a king has come, and he's asking for water. So that is also a very nice example we can take as a samadhi. To be, we can say in short, in crux, means to be cut off from the material world. Whatever happens is samadhi. Always remain focused on the Lord is samadhi. That is the main thing we have to understand. So that is samadhi. Samadhi means not so, तो बोला समाधि लगाओ तो तुरंत हम लोग पद्मासन लगा के बैठ गए, मुद्रा बना लिया, or we sit like this. And I was hearing to one lecture of His Holiness Radha Govind Maharaj. He was saying he once he got some invitation, and for some such kind of like samadhi program or something. He was saying people were there, and he was, but I was surprised like this. There is no talking, uh, not talking, nothing, full silence. And बोले समाधि लगा, समाधि when everybody was he saying 90 out of 100, 95 people were sleeping, and only 5% were there who were awake. And even they were, he was saying, Maharaj was, I'm sure they were not thinking of Lord. They must be thinking, अरे मेरा business का क्या हो गया, मेरे बच्चे का क्या हो गया, मेरी बीवी कहाँ गई होगी. So that is not samadhi. That cannot be samadhi. That is foolishness. So we have to understand samadhi in real sense. So this is what is being told in this shloka. And also I would like to give a nice example of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj also, once His Holiness Bhakti Bringa Govind Maharaj, he was in his lecture, he was quoting
प्रहलाद महाराज भी नो, मतलब उनको कितना परेशान किया गया है उनको एक बड़ा गड्ढे में जहाँ पे बहुत विषैले मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स वर्ल्ड के उसमें थे, उसमें डाला गया, वाज नॉट बॉदर। उनको विश दिया गया, वाज नॉट बॉदर, उनको पता भी नहीं चला। वंस व्हाट हैपेंड, हिज फादर हिरण्यकशिपु, उन्होंने उसको प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंक दिया। तो नॉर्मली विष्णु, लॉर्ड विष्णु, ही यूज्ड टू इमीडिएटली कम एंड प्रोटेक्ट, बट दिस टाइम लॉर्ड वाज थिंकिंग, ओके, let me see now what is his reaction. So he is falling, and he's Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He's chanting, he's not bothered. And Lord was saying, let me check, ये कब तक इसका ये position बना रहता है. Lord was testing that time कि let me check. And when he was just about to hit the floor, just जमीन को touch करने वाले थे, तब भगवान ने उनको पकड़ा. Till that moment he was not bothered. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He was constantly thinking of Lord. So he was not bothered कि he's been thrown, अभी मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा. No, nothing. To be cut off from this material world, from material consciousness, is samadhi. So this is what samadhi is. And yeah, this is what is given in shloka number 53. There are many examples. We see in Shastras, Gopis are there, Amrish Maharaj is there. There are so many examples. So you know all everybody. Parikshit Maharaj was, उनका भागवतम में भी उनका वर्णन है कि I think it is in 9th canto, 4th chapter. From hands he used to always do cleaning of the temple of the Lord. Then mind was always Mana Krishna Padar Vindayo. He's always thinking of Lord, lotus feet of the Lord. So he was like that. So these are all very nice examples in the Shastras. And yeah, that's it. So we'll take another shloka. So here now there is a transition, and now Arjuna is going to ask a question. So we'll see that. What is that? I am sharing shloka number 54. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha स्थित प्रज्ञस्य का भाषा प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत स्थितिं किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्. किम् असीत व्रजेत किम्. Translation by Srila Prabhupada. Arjuna said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? And how does he walk?" यहाँ पे जब समाधि का बात हुआ है, डिवाइन कॉन्शियसनेस का बात किया है, तो अर्जुन इज इंटेलिजेंट. नाउ इमीडिएटली इज आस्किंग, ओके, if somebody with this kind of consciousness, so what are his symptoms? जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे we see example, जैसे during COVID times हम लोग a very nice example. Immediately oh, if somebody is having COVID, what are the symptoms? या कोई भी नया बीमारी है, what are his symptoms? So we are interested in material things, so we get into the details. Arjuna was interested in spiritual things, so he was interested. Immediately he stuck in. बोला, okay, अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो what is his symptoms? How will I recognize him? Because we want to interact with such person. And basically this is question and answer for our benefit. Arjuna was a very nice devotee, a very topmost devotee of Lord, and he is asking all this for our benefit.
So here now Arjuna is asking, Arjuna Uvacha, Sthita Pragyasa. Who is Sthita Pragya? That definition of that such person is called Sthita Pragya. So Arjuna is saying Sthita Pragyasa ka bhasha. What is his language? Then Samadhi Stasya Keshava. When he is in Samadhi, what is his language? Sthitadi kim prabhasheta. How does he prabhasheta? What is that exact word? I will just a minute. In Sanskrit it says prabhasheta, speak. How does he speak? Kim asita. How does he sit? And rajeta kim. How does he walk? So here he is asking. He is very interested to know, like if there is some celebrity, so people are interested. Oh, how does he sit? How does he walk? In what style? So here Acharyas explain that this is not some kind of material question, and Arjuna is very much interested. So he is not asking question like there is some, they say people are को मतलब सिखाया जाता किस तरह चलना है, किस तरह बोलना है. So they take lessons, special lessons on such kind of things, how to walk. So Arjuna is not asking in that sense. Arjuna is asking, they give very nice example कि भाषा. So Acharyas explain bhasha means bhashyate iti bhasha, means which describes a person is bhasha. So he's asking like how do you describe him, such person. So he's not talking about language. Actually, one very nice Vaishnava says that they were talking the topmost language, which is Sanskrit, which is Devanagari. So what other language he's going to use? So he's not asking of language, but he's asking of how do you describe. So this is he's saying means what are the symptoms of such person. Then how does he speak? So we'll see one by one in that. And here Prabhupada is saying there are symptoms for each and every man. जो हम लोगों ने देखा कि every man, every person has some kind of some characteristics and people are eager to know. So similarly, one who is Krishna consciousness has a particular nature. So जो भक्त होते हैं उनका अपना एक बोलने का तरीका होता है. They behave in particular way. So this is what Arjuna is asking. And Prabhupada gives example like a rich man. As a rich man has his symptoms from his style, from his walk, from his talk, we can make out, oh, he's a rich man. So that Prabhupada is saying, like a devotee, we should be able to immediately recognize that he is a devotee, and immediately, why we are asking this question? Because we need to connect to that person. If we are interested in devotees, we'll immediately recognize him, and then we can make friends with him. So this for that our interest is. So yeah, Prabhupada is saying same thing. Then yeah, okay. So this 4 things he is asking. Arjuna is asking ka bhasha, like how do you describe him, which how matlab, if such a person, how will be described? Prabhasheta. How does he respond? Like Prabhashet means not talking, but how does he respond? If there is some situation, वो किस तरह से वो respond करेगा अपना life में. Then किम आसीता, and how does he sit? Means actually means if there is some situation, how he remains disciplined. Then vrajeta kim, and how does he walk? Means factually how he acts in some kind of situation. There is some provocative situation, how does he act? So this is the 4 questions with him. How do you describe him? Okay, how does the person respond? Or sthitadi muni, if he's a sthitadi
प्रज्ञा वाला जो व्यक्ति है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, देन वो किस तरह डिसिप्लिन रहेगा अपने लाइफ में, एंड वो किस तरह एक्ट करेगा, हाउ डज ही एक्ट. So these are the 4 questions which Arjuna is asking. And now on again we have seen 2.7. तो ये 2.7 में अर्जुना ने सरेंडर किया था एंड 2.11 से भगवान ने बोलना शुरू किया था. So here again it's like a dialogue question answer session. तो अर्जुन ने फिर क्वेश्चन पूछे. Now again from next shloka again Lord is going to speak and he start giving the divine knowledge. So we'll see what he's talking about such kind of persons. So if you see Arjuna's 4 questions are answered, and immediately he starts answering. In 2.55 he will answer what are the general symptoms of such person, and 56 and 57 he will say how does he speak, how does he responds to the life. Then 58 to 59 how is discipline, and then 64 to 71, right from 64 to 71, which is almost second last shloka, he will explain how does he acts. So now Lord Krishna from 55 से लेके 71 तक जो है पूरे स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है इसको डिफाइन करने वाले हैं. तो वी विल सी दैट. तो हम लोग श्लोका नंबर 55 देखते हैं. सॉरी, हरे कृष्णा. आई विल शेयर. श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं, अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arises from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो श्री भगवान उवाच, यहाँ पे जैसे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पे जब अर्जुन कहता है तो अर्जुन उवाच या ये धृतराष्ट्र उवाच या संजय उवाच, लेकिन कृष्ण उवाच नहीं आता यहाँ पे. दिस ऑलवेज श्री भगवान उवाच. So from this we can understand कि भगवान कौन है ये व्यासदेव जी हमको बता रहे हैं. व्यासदेव has written this, Ganesha has written this. So they never say Krishna उवाच. जैसे भगवान शिव जब बोलते हैं तो रुद्र उवाच, माता पार्वती बोल देते हैं तो भगवती उवाच, या जो भी पर्सनैलिटी है उनके नाम से संबोधित किया जाता है. बट यहाँ पे जब भी भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाच. एंड वी विल सी थ्रू आउट दिस सेशन. सो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड कि ही इज नॉट ए नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन. बिकॉज बहुत सारे पूछते हैं अरे कृष्ण तो क्या एक राजा था. एंड अभी मैं जब वृंदावन गया था तो देयर वाज वन जैन पर्सन आई केम अक्रॉस एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग. बोले वो तो हमारे तीर्थंकर हैं, वो भगवान नहीं है. वो भगवान तो कुछ और, कुछ नाम लिया उन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर, वो भगवान है. सो पीपल हैव लॉट ऑफ सच आइडियाज. दे हैव देयर मेंटल कंकोक्शन. मतलब I don't know whether it is शास्त्र से तो नहीं है ये, because शास्त्र tells कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इज भगवान. सो ये आइडिया सब कहाँ से अपना मन गढ़ंत जो है इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं. सो दिस इज वन पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज. और इसीलिए
भगवान वॉच है, इसीलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। अभी जैसे मैं एक बुक लिख दूंगा तो उसको कोई स्टडी नहीं करेगा, नो बडी इज इंटरेस्टेड। बोले बोले फालतू चीज में हम लोग को टाइम नहीं है हम लोगों की। सो आई डोंट वांट टू, बट होल वर्ल्ड, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल आर इंटरेस्टेड टू स्टडी। Why? Because there is some nice knowledge being given. There is some philosophy over here that we have to understand. तो अब वो क्या कह रहे हैं, प्रजा हाति यदा कामान। कामान मीन्स ऑल अवर जो काम यानी इच्छाएं हैं, जो भी मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, धन चाहिए दौलत चाहिए, तो प्रजा हाति यदा कामान, वी हैव टू गिव अप दिस काइंड ऑफ एंड सर्वान, नॉट एक या दो डिजायर बट सर्वान। Lord is saying सर्वान पार्थ मनोगतान, which desire from mental concoction. आत्मन्येवात्मना तुष्टः, we have to be तुष्टः, satisfied, and स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, ऐसे व्यक्ति को हम लोग स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। तो we'll now repetitively see this word as स्थित प्रज्ञ because उसका definition यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्योर कॉन्शियसनेस वाला जो पूछा गया था कि प्योर कॉन्शियस से जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसका क्या लक्षण है, तो भगवान स्टार्टेड। तो भगवान पहले क्या कह रहे हैं कि ही हैज टू बी प्योर एट माइंड। एक तो माइंड, दैट मीन्स दैट आवर माइंड इज कंटेमिनेटेड, अशुद्ध है हमारा मन, तो हमारा मन को शुद्ध करना है। और ये मन अशुद्ध क्यों होता है? बिकॉज देयर आर काम वासनाएं हैं हमारे मन में, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो दैट काम वासना हैज टू बी रिमूव। एंड और ये काम वासनाएं क्यों आती है? ड्यू टू मेंटल कंकॉक्शंस। हम लोग कुछ अपने मन से हम लोग कुछ करते रहते हैं, कंकॉक्ट करते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो आइडिया आता है, और सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से फिर हमारा मन जो है वो अशुद्ध हो जाता है, एंड देन दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट। तो ये सब हमको हटाना है। तो ये जब दूर करते हैं और जब इन सब इंद्रिय तृप्तियों को छोड़ देते हैं, तब हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, द भागवतम अफर्म्स दैट ओनली that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities. तो भागवतम में भी एक श्लोक आता है जहाँ पे मतलब हमने पहले भी एक दो बार देखा होगा इसको, कि जो एक भगवान का भक्त है उसमें ऑटोमेटिकली सब अच्छे गुण आ जाते हैं। इट डजंट नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू बी गुड। जो भगवान का भक्त है ऑटोमेटिकली इसमें सब। लेकिन ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू बी गुड ऑन, मुझे अच्छा मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना, और इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल टेक लॉन्ग टाइम। सो भगवान का भक्त ऑटोमेटिकली ही हैज ऑल द क्वालिटीज। एंड भगवतन ये भी कहता है कि ही हैज द क्वालिटीज ऑफ देवता, ऑल द जितने भी देवता हैं उनके गुण उसके अंदर आते हैं भगवान के भक्त में। सो ऐसा जब वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है तो देन द प्योर कॉन्शियसनेस कम्स इनटू हिम। फिर आर्टिफिशियली वी कैनॉट स्टॉप दिस। प्रभुपाद जी कहते हैं आर्टिफिशियली सच सेंस डिजायर कैनॉट बी स्टॉप। यहाँ पे भगवान ने कहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन स्टॉप करना है तो आर्टिफिशियली नहीं होगा। जिससे हम लोग हमेशा एग्जांपल लेते हैं छोटे बच्चे का जो बहुत मस्ती करता है, मिस्चीवियस, वी टेल हिम सिट साइलेंट, सिट साइलेंट, तो एक बार दो बार 10 बार वो चुप बैठेगा, बट उसका नेचर है उसका मस्ती करना। तो उसके लिए क्या करना है, उसको वी हैव टू गिव सम एंगेजमेंट। तो उसको जब बोलेंगे ये मत करो, अच्छा उसको सुंदर स्त्री चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब चाहिए, व्हाई इज दैट? बिकॉज ही इज नॉट एंगेज। तो ही विल कंट्रोल फॉर सम टाइम। इसीलिए हम लोग देखते हैं दूसरे जो भी पद्धतियां हैं, तो हिज माइंड इज डाइवर्टेड फॉर सम टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड, बट अगेन हिज माइंड गोज देयर, सो ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट फुली। व्हाट हाउ ही कैन डू दैट? ओनली व्हेन ही एंगेजेस। तो जब वो भक्ति में मन लगाता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो वहां से ध्यान हट जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर आगे yeah, okay, so this is
what is there in this shloka. We have to Lord is describing about Astita Pragya. He doesn't have any desire for sense gratification. He is pure at mind, and such a person will be called as Stita Pragya. Okay, so I think I will. The second shloka is very nice. I don't want to take shortcut and say it in small, so we'll stop here. And if there is some questions, we can take. Hare Krishna. No questions, Prabhuji, from my side. Okay. Baiji Mataji, Anushka, Priya Mataji. No questions today, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Okay. Yes, Mataji. No question, just one observation about how we have to, when we withdraw from something, we can't leave it in a vacuum. We have to fill it up with something. It is actually very true in real life also. So the thing is, detachment hona chahiye, but that attachment also should be there to something else. And spiritually, it should be in Krishna consciousness. That's my understanding. Bhakti. Yes, correct. We have to detach from bad and we have to engage in the Good. good. So this is very much required. Nahi to again he will start, because if we see many people who have bad habits like smoking, drinking, or whatever. New Year is coming, so everybody will start taking resolutions. I will not do this. I will not do that. I will stop doing this. But by the time Jan 15 or 30 first comes, immediately they are back into that same mode. So why is that? Because they are restricting, but they are not engaging. So if we do that, then it becomes very easy. So this is a very nice point we have to understand. Thank you, Vaji Mataji. So what we can Hare Krishna, say Prabhuji. is, Thank you. yes, thank you, ma'am. So what we can say is practical in life. If we have to live, uh, see, we are all doing. We have businesses, we have work, we are into our life. So Lord is not saying you have to leave everything and you just go to Himalayas and you have to pray. Whatever work we are doing, we have to do that, and our consciousness has to be pure. And with that pure consciousness, if we keep doing our work, then Lord is going to have mercy on us. So practicality of Bhagavad Gita, what we can say is, this is the lesson we have to take from our today's session, that we have to try to improve our consciousness. Our consciousness is impure, and that has to be, that bar has to be raised. And the more we keep doing that, the more we keep becoming a better person, more we will be like the God Krishna, Lord Krishna. He will like us, and he will keep helping us more. So this is what lesson है, because many times people, लोग ये सोचते हैं, अरे ये तो भगवत गीता तो सुनना है, फिलोसफी समझना है. नहीं, we have to live Bhagavad Gita. It is not just listening and understanding, but you have to practically, like I give sometimes example of anything you learn. It cannot be just like lessons. It has to be practical. Maybe a lesson of a guitar or swimming, anything. Just you learn and they give you some symbols. So you may by heart, you may become, okay, you're good in making that, composing a music. But if you don't actually play, what is the use? You know the philosophy, पूरा मतलब swimming कैसा करना है क्या, but you have never gone into the water. So Bhagavad Gita is like that. We need to be practical about that. So thank you everybody, and Hare Krishna. We'll meet next Saturday. Hare Krishna. श्री भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. हरे कृष्णा.